Good morning, my dear friends. I'm Dr. Rekha Agrawal, Associate Professor in Index Medical College. So today we are dealing with a very important topic, that is the benign lesions of the cervix. As this is the most common cancer of the female in India and many developing countries. So this is very important to know. In developed countries, breast cancer is most important, but in our country, cervical cancer is the most problematic, and it can be treated if it is detected at the right stage. So we are very much concerned about this so that we can reduce the mortality. So what is this? The cervical ectopy या erosion, ये होता क्या है? ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं. We are reading mainly about the benign lesions of the cervix. Cervical ectopy is a condition where the squamous epithelium of the ectocervix is replaced by the columnar epithelium, which is continuous with the endocervix. It is not an ulcer. It is not an ulcer. Simply, the squamous is replaced by the columnar epithelium. So here you can see the diagram. That is the endocervix, and bahar jo hai, that is the ectocervix. So jo bahar ectocervix hai, that is the squamous epithelium that invades into the endocervix, and it gets converted into the columnar epithelium. So this is called this squamous cell conversion into the columnar cell is called ectopy. Now, what are the etiology causes? क्या है इसके? या तो congenital हो सकता है या it can be acquired. Okay, so congenital means it is present from the birth. At birth, in about 1/3 of cases, the columnar epithelium or the endocervix extends beyond the external os. So the columnar epithelium or the endocervix, जो अंदर है, that extends beyond the external os. This condition persists only for few days until the level of estrogen derived from the mother falls. And what is acquired? Acquired means it can be because of the hormones. So the squamo-columnar junction is not static. This is normal. मतलब कि ये static नहीं रहता, इसमें changes आते रहते हैं, and its movements either inward अंदर की तरफ या बाहर की तरफ is dependent on the estrogen, which is normally present in the first 15 days of the menstrual cycle in our body. When the estrogen level is high, it moves out so that the columnar epithelium extends onto the vaginal portion of the cervix, replacing the squamous epithelium. This state is observed during pregnancy and among the pill users because estrogen is high during pregnancy, and among the pill users, the squamo-columnar junction returns back to its normal state after 3 months following delivery and little earlier following the withdrawal of the pill. I mean to say, when we are in pregnant stage or we are taking OCPs, this squamo-columnar junction will come out. Now, it can be the erosion or ectopy, what we are learning. This can be second reason, maybe because of the infections. So, chronic cervicitis. Suppose there is a long infection of the cervix, so it can lead to this ectopy because of the delicate columnar epithelium, which is more vulnerable to the trauma and infection. What is the pathogenesis? In the active phase of the ectopy, in the active phase means when this replacement is occurring, the squamo-columnar junction moves out from the os. So squamo-columnar junction is moving out from the os means जो अंदर की columnar है वो बाहर की तरफ आती जा रही है. The replace, and ये जो होती है, this is more delicate and it is more sensitive for the trauma. The replace epithelium is usually arranged in a single layer. That is a flat type or maybe hyperplastic, मतलब कि बहुत सारी layers हो, as to fold inwards to accommodate in the increased area of follicular ectopy. अब जब बहुत ज़्यादा growth हो जाएगी तो उसको क्या space कम है, so it will fold. So this is called follicular ectopy. It becomes heaved up to fold inward and outward. Papillary ectopy मतलब कि papillae form में दिखेंगे. During the process of healing, अब क्या हो रहा है, ये एक growth हो गई. Now comes the static phase, healing phase. During the process of healing, the squamo-columnar junction gradually moves upward towards the external os. अब ये क्या है, दोबारा से normal होने की कोशिश कर रहे हैं. The squamous epithelium grows beneath the columnar epithelium until it reaches at or near to the
original position. The replacement is probably by squamous metaplasia. The possibility of squamous metaplasia of the reserve cell is also likely. So what is occurring? कि normally जो squamous epithelium थी, वो पहले कॉलमनर ने ओवररूल कर लिया था. अब कॉलमनर को हटा के दोबारा से स्क्वेमस सेल्स आ रही है, बट दे कैन बी मेटाप्लास्टिक, देयर कैन बी सम चेंजेस. दैट इज व्हाई वी आर वरीड कि भी यार ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट ना हो जाए. Now comes the cervical canal, and in this diagram you can see cervical canal, papillary ectopy, simple or flat ectopy, follicular ectopy. There are different types of ectopy. During the process, the squamous epithelium may obstruct the mouth of the underlying glands. Normally not present in the ectocervix. Pent-up, there can be the pent-up secretions, there can be the retention cyst, and Nabothian follicles can be present. The epithelium may burrow inside the gland lumina. This process of replacement by squamous epithelium is called epidermidization. The process of replacement by the, that is मतलब कि columnar का जब squamous ने replacement कर दिया, this is called epidermis. जैसे epidermis होती है, squamous epithelium होती है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं epidermidization. So what are the clinical features and what are the symptoms? So symptoms क्या होंगे? Patient will complain of the vaginal discharge that can be mucoid, mucopurulent, blood stained discharge due to the premenstrual congestion. Then there may be contact bleeding, especially during the pregnancy and pill use, either following coitus or defecation. There can be backache, there can be pelvic pain, or the patient will present with the infertility. Then what are the signs? The internal examination reveals per speculum there is a bright red area surrounding and extending beyond the external os in the ectocervix. The outer edge is clearly demarcated, as you can see in this diagram. The A and BB is more clear. C is also very clear. On rubbing with the gauze piece, there may be multiple oozing spots, sharp bleeding in isolated spots in carcinoma. So there can be multiple oozing. It will not be like carcinoma, where you can see a lot of bleeding and sharp bleeding in isolated spots. So, how we differentiate between many things like ectropion and early carcinoma? Because patients are very worried. Primary lesions, chancre, then tubercular ulcer. They're the common things which we should think when we see an ectropion. So what happens in the ectropion? The lips of the cervix are curled back to expose the endocervix. ऐसे हो जाएगा, invert हो जाएगा. This may be apparent when the lips of the cervix are stretched by the speculum. Early carcinoma, it is indurated, hard होता है थोड़ा. जो cervical carcinoma होता है, उसकी जो feeling होती है, that is hard, indurated. Friable होगा, आसानी से निकल जाता है. यदि cauliflower growth है, and usually ulcerated, which bleeds to touch. और उसमें भी हमने क्या बताया? Sharp bleeding होगी. Confirmation is by the biopsy. This is the gold standard technique. Then primary lesion, chancre. The ulcer has a punch out appearance. ऐसा लगेगा punch लगा के तब निकाला होगा. That is the chancre. Syphilis में जो होता है. Tubercular ulcer कैसा होगा? Again ये भी indurated होता है, जो हम CA cervix से कर सकते हैं confusion. But फिर क्या होगा? Biopsy कराएंगे. With caseation at the base, biopsy confirms the diagnosis. Caseation कैसे होगा tubercular ulcer में? वो हमें दिखेगा माइक्रोस्कोप से. Pathology finding रहेगी. फिर क्या है? Symptomatic cases. अब they are detected during the pregnancy and early puerperium. Early puerperium में मैंने बताया because of the increased estrogens, है ना? और ये डिलीवरी के कितना 3 months में resolve हो जाती है ectropion की प्रॉब्लम. तो the treatment should be withheld for at least 12 weeks. हमें 3 months देने चाहिए कि भी वो normal हो जाएगा. In pill user, pill should be stopped and period method is advised. ठीक है, क्योंकि उससे उसको एक्ट्रोपियन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं. और फिर उससे क्या हो रहा है? हम एक्ट्रोपियन के लिए क्यों वरीड है? बिकॉज इन्फेक्शन होगा, मेटाप्लेसिया होने का डर है, देन CIN वगैरह. यदि हमने नहीं ध्यान दिया. परसिस्टेंट एक्ट्रोपी विद ट्रबलसम डिस्चार्ज. तो परसिस्टेंट एक्ट्रोपी क्या होगा?
यदि डिस्चार्ज होता रह रहा है तो शुड बी ट्रीटेड सर्जिकली बाय थर्मल कॉटराइजेशन है, क्रायो सर्जरी है, लेजर वेपराइजेशन है। तो हम जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो करते हैं हम क्रायो सर्जरी। अब इसमें क्या किया हमने, प्रोसीजर ऑफ द थर्मल कॉटराइजेशन। इसमें हमने थर्मल कॉटरी से जो एक्टोपियम का पोर्शन है उसको कॉटराइज कर दिया ताकि वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए। इवर्जन, दैट इज द एक्ट्रोपियन। In chronic cervicitis, marked thickening of the cervical mucosa with the underlying tissue edema. These thickened tissues tend to push out through the external walls along the direction of least resistance. The entity is most marked when the cervix has already been lacerated. The lips of the cervix curl upwards or outwards to expose the red-looking endocervix so as to be confused with ectopy. Then what is cervical tear? Varying degrees of cervical tear is invariable during the vaginal delivery. One or both the sides may be torn or tear may be irregular. That is the stellate type. So both or one side then be tear, जैसे stellate होता है ना ऐसे. If there is no superimposed infection and tear is small, the torn surface may be opposed, leaving behind a small notch. यदि bleed नहीं कर रहा है तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं. Non-obstetric causes of cervical laceration are during the operative procedures of dilatation of the cervix, postmenopausal atrophy or chronic cervicitis, which is mainly predisposed to tear. Then what are the cervical cysts? Cervical cysts. So we'll read about the Nephrotian cyst. होता क्या है, Nephrotian cyst बहुत commonly दिखते हैं और हमें इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत होती है. So usually multiple form due to blocking of the cervical gland, mouse usually as a result of healing of ectopy, epidermalization. तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि ग्लैंड का जो माउथ होता है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, इससे कुछ सिक्रीशन पैंड अप हो जाते हैं. That causes a Nephrotian cyst. The presence of cyst furthest from the external os indicates the extent of transformation zone. तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि जितना दूर था ना तो Nephrotian cyst तो वहाँ पे epidermalization हुआ होगा. The lining epithelium is columnar. इसकी जो lining है वो epithelium columnar होती है and the treatment is directed towards the chronic cervicitis. तो हम उसको उसी लाइन में ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक है. एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट. एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट क्या होती है जो हमें सर्विक्स में दिख सकती है? तो ये है सिचुएटेड इन द पोर्शन ऑफ वेजाइनलिस पार्ट ऑफ द सर्विक्स. होंगी ये सर्विक्स में ही, बट जो पोर्शन सर्विक्स का वेजाइना में है, अपर पार्ट, मतलब सर्विक्स का लोअर पार्ट और वेजाइना का अपर पार्ट. द सिस्ट इज स्मॉल and reddish and of less than 1 centimeter in diameter. The cyst is small and reddish and of less than 1 centimeter in diameter. It is more explained by the implantation theory. The implantation of the endometrium occurs during the delivery or surgery. So the lining epithelium shows. तो इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम कहाँ से आ गई? इट अकर्स ड्यूरिंग द डिलीवरी या फिर सर्जरी हमने कोई की हो, लाइनिंग जैसे डीएनसी किया हमने तो थोड़ा बहुत टिश्यू जो है वो सर्विक्स में रह गया. द लाइनिंग एपिथेलियम शोज एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा. सिम्टम्स में क्या आएगा? इंटरमेंस्ट्रुअल या पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग, डीप डिस्पेरोनिया या डिस्मेनोरिया. स्पेकुलम एग्जामिनेशन क्या बताएगा? स्मॉल रेडिश सिस्ट. एंड द ट्रीटमेंट क्या होगा? डिस्ट्रक्शन बाय कॉटराइजेशन and rarely by excision. Mesonephric cyst. Mesonephric cyst क्या होती है? Situated on the outer side of the cervical stroma. ठीक है, outer side of the cervical stroma में होंगी mesonephric cyst. This seldom exceed 2.5 centimeter. They are lined by the cuboidal epithelium. They are asymptomatic. The existence of the cyst is discovered on speculum examination and confirmed by the X-ray biopsy. So they are the differential diagnosis we are reading. Now comes elongation of the cervix. So what is the elongation of the cervix? मतलब कि जो इंटरनल लॉस और एक्सटर्नल लॉस के बीच का एरिया है उसकी लेंथ नॉर्मल से ज्यादा हो रही है. तो नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. द वेजाइनल एंड सुप्रा वेजाइनल पार्ट आर ऑफ द इक्वल. मतलब 2.5 में से 1.2 और 1.2 ऐसे आप लगा लो कि ये हमारे दो पोर्शंस हो गए सर्विक्स के.
इलोंगेशन में अफेक्ट ईदर पार्ट ऑफ द सर्विक्स, सुप्रावेजाइनल या फिर वेजाइनल। कॉज में क्या आएगा, इलोंगेशन ऑफ द सुप्रावेजाइनल पार्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द यूट्राइन प्रोलैप्स। जो सुप्रावेजाइनल पार्ट है, मतलब कि जो ऊपर वाला पार्ट है, वो कब होता है, प्रोलैप्स में होता है। प्रोलैप्स में क्या होता है, यूट्रस नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वो वेजाइनल वाले पोर्शन को, जो सुप्रावेजाइनल वाले पोर्शन को उसके साथ, उसको अपने साथ खींचता जाता है। ठीक है, वेजाइनल पार्ट इज ऑलवेज इलोंगेटेड कंजेनाइटली, और जो वेजाइनली हमें दिखता है ना परिस्पेक्युलम करने पे, यदि वो लंबा है तो वो ज्यादातर कंजेनाइटल होता है। तो हमें क्या याद रखना है, जो प्रोलैप्स के केस है उसमें हमें सुप्रावेजाइनल इनोवेशन मिलता है। क्रोनिक सर्विसाइटिस में प्रोड्यूस सम हाइपरट्रॉफी एंड मेक्स द सर्विक्स बल्की। ठीक है, अब क्या आता है भाई, सिम्टम्स क्या होंगे, सेंसेशन ऑफ समथिंग कमिंग डाउन, ये किसमें होगा, ये होगा वेजाइनल प्रोलैप्स के केस में। डिस्पेरोनिया भी फील हो सकता है जिसमें लॉन्ग सर्विक्स है, और इनफर्टिलिटी के केसेस में कंजेनाइटल, जैसे कि मैंने बताया कंजेनाइटल इलोंगेशन ऑफ द सर्विक्स दैट कैन बी रिलेटेड विद द इनफर्टिलिटी। पेल्विक एग्जामिनेशन करोगे तो कैसे होगा, सुप्रावेजाइनल इलोंगेशन, फोनेसिस विल बी शैलो, क्योंकि जितना तुम्हारा वेजाइन सर्विक्स ऊपर है तो हमारे को फोनेसिस क्या होते हैं, जो साइड के पोर्शंस होते हैं यूट्रस के, तो वो शैलो मिलेंगे क्योंकि सर्विक्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, अदरवाइज तो सर्विक्स नीचे होता है, तो हमें अच्छे डीप फोनेसिस मिल जाते हैं। तो सेकंड क्या होगा, वेजाइनल सर्विक्स जो होगा वो नॉर्मल लेंथ का होगा। यूट्राइन बॉडी क्या सी होगी, वो भी नॉर्मल लेंथ की होगी। यूट्रोसर्वाइकल कैनाल जो होगा वो इंक्रीज होगी क्योंकि ओवरऑल लेंथ तो बढ़ी रही है। Then comes the congenital elongation. Congenital elongation में क्या होता है, फोनिक्स जो होते हैं वो डीप होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि फोनिक्स जो होते हैं डीप होते हैं। फोनिक्स जो होंगे कंजेनिटल इलोंगेशन में वो डीप होंगे। वेजाइनल सर्विक्स जो होगी वो इलोंगेटेड होगी। वेजाइनल सर्विक्स जो है वो लंबी होगी, फोनिक्स डीप होंगे। यूट्राइन बॉडी नॉर्मल होगी। यूट्रोसर्वाइकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ओवरऑल लेंथ तो बढ़ी रही है। एविडेंस बाय द यूट्राइन साउंड, हम यूट्राइन साउंड से जब मेजर करेंगे तो साइज ज्यादा होगा। ट्रीटमेंट क्या है, सुप्रावेजाइनल इलोंगेशन। तो अब हम पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट। सुप्रावेजाइनल इलोंगेशन का मतलब क्या हुआ, जो प्रोलैप्स है, as it is associated with the prolapse, its treatment protocol will be same as that of the prolapse. यदि हम सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी हो जाएगी, अदरवाइज हम स्लिंग कर रहे हैं, नॉन प्रेग्नेंट अभी बेबी है तो उसमें वो ट्रीटमेंट से वो रिकवर हो जाएगा। कंजेनिटल इलोंगेशन यदि है, जैसे ये केस देखो आप, इसमें दिख रहा है पिक्चर में कि भी कंजेनिटली इलोंग है सर्विक्स है, अब वो इंटरफेयर करेगा ना इनफर्टिलिटी वगैरह में। तो द एक्सेस लेंथ ऑफ द सर्विक्स इज एम्प्यूटेटेड in presence of the congenital prolapse, some form of cervicopaxy has to be done। तो किसी तरह आप सर्विक्स को छोटा करते हो, एम्पुटेट करते हो और उसको रिपेयर करते हो।